Gratitude greetings. Masters of Transformation with Gitika Ansani. Today's special guest is a real master, Arya Bharti Sinha. She's a psycho spiritual healer, NLP leader, a yogi who does yoga. She's an author with a difference, helping women heal anxiety and stress naturally. Emotional, mental, physical balance she can help attain with ease, peace, and grace. 10x anxiety reset, she is known for it. And she's a super mom of two, a 13-year-old and a 7-year-old. We are truly, truly, truly blessed to sit with Arya today. Welcome, Arya. Thank you, Sunny ji. What is the secret of your smile? Usually I don't think कि मैं इतना ज़्यादा smile करती हूँ, but then now you are saying तो even I am observing that yes, I have been smiling from last couple of minutes. Secret, yes, I am happy most of the time, joyful from within. I mean, अंदर से वो एक energy आती है, वो feeling आती है, so I'm joyful. ये कहाँ से आती है? हमें भी थोड़ी दिला दो, प्लीज. कहाँ से आती है जब आप फील करते हो कि यार यू आर ट्रूली ब्लेस्ड, इस धरती पे आए हो ना, जन्म हुआ है ना, ये जिंदगी मिली है ना, यू आर ब्लेस्ड। जब ये फीलिंग समझ में आती है तो लगता है यार हंस लो, मतलब क्या रखा है, आज नहीं तो कल जाना है ऊपर। जब ये समझ में आता है तो यस आई स्माइल। भगवान पूछेंगे भाई स्वर्ग कैसा था, क्या बोलेंगे? वेरी वेरी नाइस, थैंक यू. हाँ, यही स्वर्ग स्कूल है ना में, हमारे लिए, मेरे लिए यही स्वर्ग है। यस, एंड यूर अ सुपर मॉम. एंड स्कूल में कोई नहीं बोलता मुझे एंजाइटी रीसेट कोच बनना है. तो आप ऐसे कैसे साइको स्पिरिचुअल हीलर बन गए? सो प्लीज शेयर अबाउट योर जर्नी. ओके, सो मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि मतलब when I started my journey, when I was suffering in my life, then my journey started. और मुझे पता भी नहीं था कि I was going through anxiety, मुझे क्या था मुझे नहीं पता। बट देन हाँ, when now I understood about symptom, मैंने ना कभी डॉक्टर को मिली थी ना कभी कुछ मिली थी किसी को भी। बट देन लेटर अभी जब मैंने मतलब समझा क्या होता है एंजाइटी, तो आई अंडरस्टूड दैट कि यार मुझे भी एंजाइटी जैसा ही कुछ था। और मुझे अभी समझ में आया है कि एंजाइटी हर एक इंटेंसिटी का है। आई मीन कम भी होता है जहां पे कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हो। और एक नेक्स्ट लेवल का भी रहता है जहां पे कि आप फिजिकली बहुत ज्यादा आप आई मीन अफेक्ट रहते हो, अफेक्टेड हो जाते हो बिकॉज ऑफ एंजाइटी। तो इसका भी मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि अरे मुझे एंजाइटी हो रही है, बट देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल की एंजाइटी है। आई मीन बहुत इट्स लाइक एंजाइटी सभी को है। इनफैक्ट you sitting over there, the person walking on the road, everyone has anxiety. But then अब उसका इंटेंसिटी क्या है उस पे डिपेंड करता है कि मतलब क्या आपका मेंटल, फिजिकल या इमोशनल स्टेट रहेगा। ओके, तो अब जब मुझे समझा कि यार एवरी पर्सन इज गोइंग थ्रू एंजाइटी, सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट टू हेल्प पीपल लिव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। उसको जॉयफुल रहने में क्यों नहीं हेल्प करना यार? पता नहीं है कि मतलब आई मीन यू आर ब्लेस्ड दैट यू आर बोर्न टू दिस अर्थ, राइट? आप ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिए हो, यू आर ब्लेस्ड। और इस जिंदगी को ऐसे ही एंजाइटी में ओवर थिंक करके मेंटली सिक होके व्हाई टू वेस्ट, राइट? इस जिंदगी को क्यों खत्म खराब करना है ना, सभी को तो ये मिलता नहीं है। आई मीन वी आर ब्लेस्ड। देन आई थॉट, आई मीन आई फेल्ट लाइक आई शुड, एंड मोस्टली वीमेन आर स्ट्रगलिंग विद दिस। पता नहीं ये चीज क्यों ऐसा है कि
लड़कियां बहुत ज्यादा ही, आई मीन, ओवर थिंकिंग में रहती हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली drained out most of the time, stressed. That is why I decided to help them heal. From there, my journey started, and I would say my kids have been a blessing in my life, who helped me realize that I need healing. I need to do something in my life. Because I used to shout at them, मतलब मैं उनपे सारा जो मेरा बर्डन है ना, सारा स्ट्रेस मैं मेरे बच्चों पर निकालती थी. And after that, I used to feel guilty about that. But then, though, I mean, those kids are the reason that I am here. They told me, I mean, indirectly, they told me, Mama, there is something wrong with you. You need to do something about you. फिर मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की. आई healed myself, and I realized that every second woman in this planet, और मोस्टली इन जहाँ जितने मतलब मैं आसपास देखती हूँ तो इस चीज से गुजर रहे हैं. And I thought that let me give myself to help them heal. Awesome. And we got a great coach in the form of Arya Bharti Sinha. Thank you. आप ये इतना पीसफुल और खुश स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कैसे रहते हो? क्योंकि नहीं लाइफ रहती. हैवी भी होती है, हाँ. तो आप नहीं इतना रहती. पीसफुल कैसे रहते हो आप? नहीं रहती. I'm not always peaceful. There are times I get triggered. There are times I still shout. But yes, अगर मैं 100 बार शाउट करती होती पहले, तो it is coming down to 90 to 80 to 70 to 60 to 50 to 40, and it has been very less. But ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा पीसफुल रहती हूँ. It would be wrong to say that कि मैं पूरी तरह से, I mean, I am human, right? Definitely ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी में कुछ तो डिफरेंस है ना. हम ह्यूमैनिटी से डिविनिटी की तरफ जाते हैं ड्यूरिंग आवर ट्रांसफॉर्मेशन, बट देन इट्स लाइक लाइफ लॉन्ग जर्नी, जहां पे कि आप हर दिन टूवर्ड्स, यू ग्रो टूवर्ड्स दैट. बट हाँ, डेफिनेटली बहुत कम हो गया है. तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, आई मीन, ड्यूरिंग दिस जर्नी I healed myself. I understood myself more than, I mean, reading anything. I just learned myself, my patterns, what I think, why I think, from where it is coming. So it's not like some knowledge, but it's like deep, you can say, a reading, deeper reading of my inner self. I have read myself. I am reading myself every single day. And that is helping me the most. Definitely, books has helped me. Definitely, Gyan has helped me, whatever I have received. But then the way I have read myself has given me a lot. That is what I mainly focus when I help others to learn. Read yourself, read your patterns. What is it that your inner self is trying to tell you? I mean, जितना खुद को जानोगे ना, अंदर घुसोगे अपने अंदर, everything you will get. गाना Every कौन सा answer अच्छा you will get. गाते हो आप? क्योंकि आप गाना तो गाते हो. कौन सी दो लाइनें आप बच्चों को सुनाते हो? सो जाओ, लव यू जिंदगी, तू मेरा नन्ना प्यारा बच्चा है. हाँ, मैं गाना ठीक ठाक गा लेती हूँ. दो लाइनें गा दो हमारे लिए, जो बाद में बच्चे सुने, मम्मा क्या गाया है. जीजा जी सुने बोले वाह, ये ले 9 लखा हार. मम्मी पापा सुने बोले वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा. लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी. ओ, क्या है उसमें, मतलब लाइन्स में मैं भूल गई हूँ. गीतिका हेल्प करेगी. जो दिल. जो दिल से लगे,
उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे। उसे कह दो बाय 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 बाय, जाने दो, दिल से चले जाने दो। कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। आई होप दिस वाज गुड इनफ। This is awesome. This is the spirit of true sportsman spirit and participation. And this makes life fun. एंड आपका तो कॉर्टिसोल वॉर्टिसोल भी ठीक हो गया होगा अब। मैजिक हो जी आप someone who I admire. Gitika Dadwani, a great coach, a healer, a tarot life coach, is going to ask deeper questions, ओके। serious questions. क्योंकि मैं तो आसान सवाल पूछता हूँ जी। Over to Gitika. Welcome, Arya, to Masters of Transformation. And, seeing you, I just feel like that I should ask this question. I feel that you have described that you have discovered yourself over the journey. And I feel when we are growing up, it is less about learning, but it is more about unlearning. So I want to Right. know that what are the top three values of yours that you have known now, or top three priorities that you think are important for you now that you were not acknowledging before, and why? ओके। सेल्फ रियलाइजेशन is one of my top most value. Definitely compassion. And I do realize now that when I formally was doing this activity under my life coaching certification program, uh, these were not in my list. I mean, whatever I said, but it has changed a lot. Thank you so much, Geetika, for asking this question. And it's huge realization that, going forward, how you change. I mean, your values keep on changing. What it was 1 year back, the same you don't have now. So, as I said, self-realization and love, compassion, and definitely family. Yes, And yes, I would like to add one more. Can I? yes, yes, yes. It's like solo trip. I mean, traveling. Wonderful. Yeah, and yes, all the values that you have shared, I feel that belongs to your persona. And yes, I feel that you are also very compassionate as a human being and as a coach. So Thank you. thank you so much, Arya. And the next thing that I want to ask you is that um, what does success mean to you? Being joyful. Success for me is being joyful. I mean, that ecstasy, that feeling of joy from within is success for me. Yes. Yes, very true. And the last one and the easiest one is that if you could whisper any one message for all of us, to all the audience of our YouTube family and of our Masters of Transformation audience. So, what would be that one special message that you want to share from your end? Live this life. Live this life to the fullest. This is the one message that I would want to share. It's like not new, nothing new. Everybody knows that we should live, but the same message I want to repeat again and again, and I would repeat 1,000 times. Live this life to the fullest. You are blessed to be born on this planet as a human being. Enjoy it, live it. I mean, just if
a dog could have answered. I mean, अगर वो capable होता इस चीज को बोलने के लिए, तो वो समझा पाता कि आप कितने blessed हो as a human being, अगर born हुए हो इस धरती पे तो. So just one message: live this life to the fullest, and also love yourself and everyone around. When I say everyone, not just human being, but each and every living being, every trees, every cow, every dog that is moving on the streets. Just send them love. That's it. That is one thing that I would like to share. And Yes, thank you so spread much, Arya. my That's the Holy Spiritness that you have shared with us. And yes, I'll now pass on to Saniji. Thank you for sharing your thank you. insights. Thank you, Gizika. Wow, Thank you. wow, wow. Super realization, super answers. Let's play one word. Love in one word. Love in one word: give. Life in one word. Live. Parents in one word. इजी कर देता हूँ. Parents मम्मी in इन one वन word. वर्ड. पापा इन वन वर्ड. Mummy in one word: healer. पापा इन वन वर्ड. Core values. जीजा जी इन वन वर्ड. Values. Responsible. बच्चे इन वन वर्ड. लेट्स ब्रेक दिस. बेटा इन वन वर्ड, बेटी इन वन वर्ड, क्योंकि दोनों देखेंगे. मम्मा मेरे बारे में नहीं बोला. Beti in one word: healer. Yes. Healer, or you can say, yeah, I mean, realization. Beta in one word: um, how to say this? जो उसको अच्छा लगे वो बोलना. क्योंकि वो बोलने वाला है. अच्छा, मम्मा नहीं, बट मैं मेरे एक्चुअली बारे वो में तो कनेक्ट सोच रहे. करके ही बोल मेरे रही हूँ. बारे में तो सोच रहे थे आप. अच्छा क्या बोलूं. Beta in one word: sweet, cute, love. अब देखो बेटी बोलेगी अच्छा उसके लिए 3 वर्ड. ओके. आर्या इन वन वर्ड. Arya in one word: angry. Angry You are woman. loveful. You are loveful. And your anger is directed towards healing, Yes, seva, that's for true, Saniji. everyone to That's live true. life, to love every being. Thank you Yes, so much, Arya, for being thank you, loveful, Saniji. for being the leader you are, for the movement you are. Movement to help us live life to the fullest. Movement to see blessings. Movement to feel the grace of human birth, of God Almighty. So we wish you all the best in all your noble future selfless endeavors, and sending love to both, and tell them thank Thank you. you. Thank you, Thank you. Saniji. Thank you, Gitika. Thank you so much for connecting. Thank you so much for giving me this opportunity, and opportunity where I could speak up, where I could, I mean, share things. Maybe my words will reach out to people, more people, and help them
live the life to the fullest and be little more loving and compassionate towards this earth and towards every human being. Thank you so much. Thank you. Ram Ram, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Ram Ram Jai. Ram Ram.